Morning students, today we are going to start the new topic from the geometry, that is parallel line. This is the second chapter from your topic. So first of all we have to understand what is meant by parallel lines. Parallel is nothing but when two lines are in opposite and they do not intersect each other, that type of line is said to be a parallel line. So I have written the definition here: the lines which do not intersect each other are called parallel lines. So from this chapter we will see how the angles are forming using parallel lines, how the pairs of angles are forming, how to solve, how to find the different angles. Okay, if you have given one pair of angle, so using that pair you can determine the another angles. Okay, so this type of example we will see in this chapter. Only two exercises are there in this chapter, and this chapter is very simple. So I hope you will understood this whole topic. Okay, so let us start with the topic. So here you can see I have drawn the figure here, line L and line M. So these two lines are parallel. Okay, so line L and line M, these are not intersecting each other, so these lines are parallel. I said before here in this definition, the lines which do not intersect each other, this type of line is said to be a parallel line. Yes or no? So line L is parallel with line M, and line N is a transversal. Transversal is nothing but the lines which intersect the parallel lines. जो भी एक न्यू थर्ड लाइन रहेंगी जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल. So here line L and line M are parallel lines and line N is a transversal. Okay, and next, so using transversal you can see there are four angles are forming. Okay, angle A, B, C, D, angle E, F, G, H, these angles are forming. Okay, so line L is parallel to line M, line N is a transversal. Okay, so we have to see the relation of these all angles. What are the relations of the angles? So in the transversal, using transversal, okay, there are three types of angles are forming. First is corresponding angle is forming, second is alternate angle is forming, third is vertical opposite angles are forming, and many more. Okay, these three are very important. Okay, and interior angles are forming, exterior alternate angles are forming. So there are many angles are forming, but we will see only three angles. So first you can see pairs of corresponding angles. So how the corresponding angles are forming? How? So first you can see here angle A, B, C, D, these are four angles. Okay, so angle A and angle E, these are called corresponding angle. Angle D and angle H, these are corresponding angles. Okay, and angle C is corresponding with angle G and angle B is corresponding with angle F. तो हमको सबसे पहले समझना है करस्पॉन्डिंग मतलब क्या. करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, जब भी दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई लाइन ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये ट्रांसवर्सल की वजह से एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल ई बन रहा है. तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल ई. ओके, एंगल डी इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल एच, एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल जी एंड एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल एफ. तो अगर मैं सिंपली शॉर्ट डायग्राम बना के तुमको अगर समझाऊंगा तो तुमको इजीली समझ में आएगा. अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और एक मैंने लाइन कट किया तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. ये एंगल और ये एंगल, दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. So here the corresponding angles are forming using the parallel lines. So these two are parallel line and this is a transversal. So this transfer forming two corresponding angles. So these are the corresponding angles. Okay, so here we have to write the pair of corresponding angles. So first you can see angle D is correspondent with angle H. तो D और H किधर बन रहा है, देखो D का corresponding angle H बन रहा. Yes or no? D का correspondence क्या बन रहा, H. तो similarly अगर मुझे आगे का बनाना है, इधर ध्यान दो, D का करस्पॉन्डेंट H लिखा है पेयर. यस और नो? D का करस्पॉन्डेंट H है. उसके बाद अगर मुझे A का करस्पॉन्डेंस बनाना है, A का, तो जैसे D का H था तो A का करस्पॉन्डेंस क्या बनेगा, E. तो वी हैव टू राइट एंगल E हियर. यस और नो? एंगल E. ओके, आफ्टर दैट एंगल C का करस्पॉन्डेंस क्या बनेगा, C. जैसा A का E था, D का H था, so C will become G. So angle G का correspondence बनेगा angle G. And same way
The angle B is correspondent with angle F. So we'll write here angle F. So these are forming the corresponding angles. So corresponding angles are very simple. One pair is already given. Using one pair we have to write all remaining pairs. So one pair is there, that is okay, angle D is correspondent with angle H. So D का H था, okay, तो A का क्या बनेगा, तो A का बनेगा E, then C of G, okay, and B of F. ठीक है. So these are the pair of correspondence angles. So corresponding angles are forming using two parallel lines and one transversal. Okay. Now we'll come to the next angle, that is pair of alternate angles. Okay. So here the pair of alternate angles. Alternate angles are forming using Z. Z, you know the letter Z. It is the form of Z type of angle. अगर मैं इधर अगर Z बना दूंगा, ध्यान दो. Suppose I made a Z here. ठीक है. So if I made a Z here, so the corners angles here and here, these two angles are known to be a alternate angles. Yes or no? तो ये Z लेफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, राइट फॉर्म में भी हो सकता है. The Z is in the form of left side also and right side also. So if I made the Z in reverse form, so then only you can make form an alternate angles. Okay. Likewise, suppose I have made another Z type of angle like this. Okay. So these two angles are called alternate angles. So whenever two parallel lines and one transversal is there, so their corners angles are said to be a alternate angles. So same here, the lines are given here. These two are parallel lines and this is transversal. So you can see these forming a Z. Okay. If I draw this, okay, if I highlighted this part, so you can easily understand. So this forming a Z, yes or no? This forming a Z angle. So if it is forming a Z angle, so angle C is pair with angle E. So C का alternate angle क्या है? E. So angle of C is correspondence with angle E, means angle C has alternate angle E. So similarly यही Z को अगर मैं reverse बनाऊंगा, so angle B का क्या बनेगा alternate angle? Angle B का angle C is correspondent with angle E. So C का alternate angle बन गया E. तो angle C is alternate with angle E. So similarly angle B has alternate angle of, suppose this is the Z, you can see here, okay, this Z are forming. So angle B का क्या बनेगा? Angle H. So angle H. Yes or no? So the pair of alternate angle of B is H. The angle B is alternate with angle H and angle C is alternate with angle E is already given. So using this identity, using this angle, we have write the another angles. Okay. तो तुम इधर देख सकते हैं, these are the Z type of angle, ऐसा बना हुआ था angle. Okay. This is the parallel line, this is parallel line, and this was the transversal. Okay. So you can see it forming a Z type angle. Yes or no? So here it is B. So B का alternate क्या angle क्या बनेगा? H. Yes or no? So this is type of Z type of angle. Now I will come to the vertical opposite angle. Vertical opposite angle are type of cross type angle, X type. जो भी एंगल में X फॉर्म बनेगा X में, तो इसके अपर और लोअर में जो एंगल बनेगा दे आर इक्वल. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मीन्स, सपोज मैंने कोई दो लाइन ड्रॉ किया और इसके दो जो एंगल्स है, सो दीज आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. यस और नो? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. दीज आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल जो भी होता है वो क्रॉस फॉर्म में बनते हैं. When two angles are in cross form, so they forming two angles. Likewise here angle D is vertical with B. D का B बन रहा है इधर. Yes or no? D के लिए क्या फॉर्म हो रहा है? B. तो वैसे ही A के लिए क्या फॉर्म करेगा? C. So angle A is vertical with angle C. Okay. And next is angle H. Okay. So angle H के लिए क्या बनेगा? तो H के क्रॉस में देखने का, H के अपोजिट में, H के अपोजिट में क्या बन रहा है? F. तो वर्टिकल अपोजिट, अपोजिट मीन्स सामने. एंगल H के अपोजिट में क्या बन रहा है? F. तो दिस इज ऑफ एंगल F. तो H का करस्पॉन्ड वर्टिकल अपोजिट क्या बनेगा? F. सिमिलरली एंगल E है तो E का वर्टिकल अपोजिट बनेगा एंगल G. ठीक है. सो दिस कंप्लीट द आंसर. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर नथिंग बट द अपोजिट एंगल्स. ठीक है.
तो जैसा हमने जो भी एंगल बनाया इसके क्रॉस फॉर्म में जो एंगल बनेगा, जैसा मैंने इधर बताया एंगल ए का अपोजिट है बी, तो एंगल ए इज वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल बी. ओके, so these are the vertical opposite angles. Understood? So same from the figure we can understand that these are the cross lines here. Okay, तो B का vertical opposite D बनेगा, तो वैसे ही C का vertical opposite क्या बनेगा A. ये सर ना अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, तो वर्टिकल अपोजिट D का क्या फॉर्म होगा B. तो सिमिलरली एंगल C का क्या फॉर्म होगा एंगल A. सेम वे द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल H is of F and vertical angle of G is of E. So vertical opposite angle G is equal to E and vertical angle H is equal to angle F. So with this we have completed all three types of angle from this chapter. Okay, in the next lecture we will see the practice set 2.1. So I hope you understood. Write these notes in your notebook and complete your notes. Thank you.